North India grapples with the onset of dense fog. Travel has been severely curtailed, with flights and trains delayed by hours and many even cancelled, leaving travellers stranded all over the country. I have with me my colleagues from across North India. Let's cut across to Brian in central Delhi, who's going to give us an idea as to what the visibility looks like at this point in time. Brian? All right, Brian is not here with us at this point in time. I'm going to cut across to my colleague Arzu, who's also joining us from Delhi. Arzu, what's the situation where you're in right now? This morning, obviously, even driving to office, there was very poor visibility. If it's difficult for traffic to move about during these foggy conditions, then it's even more difficult for flights to take off. And we've all seen the recent faux pas that have happened at the IGI because of the fog. What do we know about that kind of a chaos recurring today? Well, yes, Vineet, today also the Delhi people woke up to one of the coldest day, and in the morning we have seen, dense fog. But right now, if I could show you the visuals, the sun has risen and now the situation has a little bit improved. And as the day, we will move towards the day at around 1 or 12 p.m. There will be a clear sky and relief from the cold to the Delhi people. But also, in the morning time, the visibility was very less. It was around 50 meters. So it was very tough for the people who were going towards their offices and towards their work. They were facing a lot of problems. And in fact, we have seen, how the dense fog has affected the flights, the railways. The trains were delayed, and more than, around 20 trains are delayed, whether it's coming from Jammu and Kashmir, Bihar, Uttar Pradesh, because in Uttar Pradesh also, entire North India is witnessing a dense fog. So that's why, there have been several trains that are delayed. Also, flights, around 100 flights that are delayed, whether we talk about the domestic flights or the international flights. So we are saying that how the dense fog is affecting the people's life, and also now the sun has risen, and it will help people, to come out of their house and to deal with the cold. Yes. My colleague Brian also joins us on the broadcast. Brian, where are you at this point in time? And what kind of impediments are we seeing on the road and in the skies as a result of these foggy, or rather these smoggy conditions, Brian? Well, Vineet, yes, today morning the foggy-like situation was not that persistent. Like if you show you the visuals of where we are standing, that is the way Doordarshan Bhavan, and you can actually see and understand that yes, the sun has made its appearance, and you can actually see and understand that the foggy-like situation is not very prevalent in the national capital. But yes, the cold wave still continues to grasp the residents of Delhi. The Delhiites are still feeling that bone-chilling cold. But yes, there is some. If we talk about today, yes, there is some respite in terms of, the cold wave, because right now, since the sun has made an appearance, so you do not feel that cold. But yes, earlier in the morning also, there were around 100 flights that were delayed. There were many trains also that were running delayed from around 6 hours to 19 hours, where there were many people who were staying in the stations, and they were feeling that, they were feeling, they were waiting there, they were feeling uneasy. So that problem was there and is there as well, because, if you talk about the isolated pockets, yes, the isolated pockets are continuing to, give you that very perspective that yes, there is fog. But if we talk about the central Delhi, yes, the sun has made its appearance, and as a result of that, the visibility is not at all an issue. But yes, in the morning it was around 50 meter. But now if we talk about the present condition at around 10 a.m. Now that we are here, yes, if we show you the visuals again, the vehicular movements are also in a normal movement. And yes, tomorrow also, the Republic Day preparation celebrations will also start, and amidst this also for the past few days also, the contingent was, preparing, were doing dress rehearsals amidst this ongoing fog that was persistent in the national capital. We were also giving, live updates from India Gate, where the Rashtrapati Bhavan was not that visible because of the foggy-like conditions. But yes, Vineet, if we talk about today present condition, the situation seems much better than it was a few days back. Yes, Vineet. Much better than it was a few days back. Let me in fact
cut across to Abhishek Singh, who's joining us from Lucknow at this point in time. Abhishek, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अभिषेक, क्या माहौल है? आपके पीछे तो धुंधला वातावरण दिखाई दे रहा है। लखनऊ में इस वक्त कैसे जूझा जा रहा है इस पर्टिकुलर वेदर कंडीशन के साथ? या बिल्कुल, मेरे ठीक पीछे जो सिचुएशन आप देख रहे हैं वो पूरी तरह से ब्लर विजुअल आपको दिख रहा होगा। वजह सीधे तौर पर फॉग है, या वी कैन से कि द सिचुएशन इज bit very distressed, and this is the only reason that people cannot travel from places, and the more than 12 flights are being cancelled from Lucknow. More trains are being delayed, and consequently the road transport is also getting very badly affected because of this situation. And as per the weather forecast, the information which we are getting, that the upcoming 2-3 days the situation will be the same, and you can just see the visuals which are very blurry behind me also, and this is the situation. The visibility has decreased, and the people cannot see 2-3 meters around them, and this is the only reason the road transport is badly affected. The expressways and the other long distance ways are being the expressways, the UPIDA has deployed some signboards and other things that fog is densely over there and people should not travel in high speed. People just stop where they are, and once the fog will get over, then they will start moving towards the expressways, or people who are traveling from long distance road travels, they should stop where they are. And as per the forecast, what we are getting to know is that the upcoming 2-3 days, the weather situation will be the same in Uttar Pradesh. Let me go to my colleague Mahendra, who's joining us from Noida at this point in time. Mahendra, नोएडा में क्या स्थिति है इस समय? नोएडा की बात करें तो नोएडा समेत पूरे एनसीआर में जो सुबह के वक्त है काफी कड़ाके की ठंड रहती है, और जो कोहरा है वो लोगों को बेहद परेशान करता है। फिलहाल अगर सुबह के 10 बजने वाले हैं और जो सामान्य स्थिति हो चुकी है, यानी कि जो सूर्य देवता है उन्होंने अपने दर्शन दे दिए हैं, और कहीं ना कहीं सूर्य देवता अपने दर्शन देते हैं जो टेम्परेचर है उसमें इजाफा देखा जाता है। बताया जा रहा है कि जो मिनिमम जो यहाँ नोएडा में टेम्परेचर दर्ज किया गया 60 डिग्री दर्ज किया गया था, जो मैक्सिमम जाएगा वो 15 जाएगा, यानी कि सुबह के वक्त नोएडा एनसीआर में बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और इस ठंड के कारण देखिए जो नोएडा जिला अधिकारी हैं, जो बीएसए है, बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्होंने तमाम जो स्कूल हैं नर्सरी से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों की जो टाइमिंग है, यानी कि जो सुबह स्कूल खुलते थे 7 बजे 8 बजे, उसको बदलकर 10 से 3 के बीच कर दिया। यानी कि अब जो स्कूली बच्चे उनकी जो पढ़ाई है, उनकी जो टाइमिंग है 10 से 3 रहेगी। इस बीच देखिए धूप भी निकली रहती है, और जो शीतलहर हवा है उसमें थोड़ी कम दिखाई देती है, जो कोहरा है वो भी थोड़ा छटा होता है। तो कहीं ना कहीं ठंड से अभी नोएडा एनसीआर के लोगों को राहत तो नहीं मिलने वाली। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 27-28 जनवरी तक इसी तरह की सुबह और शाम की बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। खासकर सुबह के वक्त जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको देखते हुए जो स्कूल के समय में बदलाव किया गया। वहीं देर रात की बात करें तो देर रात देखिए काफी ठंड ज्यादा होती है, जो टेम्परेचर है वो 5 तक पहुंच जाता है, और लोगों को बचने के लिए जो प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था कराई गई है। तमाम ऐसे सड़कें हैं, तमाम ऐसे एरिया हैं जहां लोग इकट्ठा होते हैं, खासकर ऑटो चालक, रिक्शा चालक, उनके लिए अलाव जलाया जाता है प्राधिकरण की तरफ से, ताकि ठंड में कोई परेशान ना हो। वहीं दूसरी तरफ देखिए, क्योंकि नोएडा में दूसरे जनपद से कई लोग आते हैं, खासकर रात के वक्त जो ड्राइवर होते हैं या मिडिल क्लास के लोग होते हैं, तो उनके लिए रुकने के लिए छत नहीं होता, वो किसी आशियाने में नहीं जा सकते, तो उनके लिए भी प्रशासन द्वारा रेन बसेरा का व्यवस्था किया गया है, ताकि ठंड में कोई भी किसी तरह की तकलीफ में ना रहे। वहीं डॉक्टर ने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले 3-4 दिनों तक आपको बहुत ज्यादा जरूर ध्यान देना होगा। अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी हैं, और जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उन पे आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जो जाती हुई ठंड है ये लोगों को बहुत ज्यादा बीमार कर देती है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं अगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में जो छोटे बच्चे उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिनको खांसी, जुकाम और सर्दी जैसे जो सिम्टम है वो बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पर कहा, देखिए छोटे बच्चों पे आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। वहीं क्योंकि लगातार मौसम विभाग भी यही कह रहा है कि आने वाले एक सप्ताह यानी कि 27-28 जनवरी तक आपको इसी तरह की सुबह और शाम की जो ठंड है वो बेहद ज्यादा परेशान कर सकती है। देखिए, क्योंकि नोएडा से जो रास्ता जाता है लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस वे, वहां बहुत ज्यादा कोहरा आता है, तो वहां आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। वहीं ट्रैफिक विभाग भी वहां मुस्तैद रहता है, वो साफ तौर पर कहता है देखिए आपकी जो स्पीड है उसमें आप थोड़ी कमी लाइए, यानी कि जो रफ्तार आप 100 पे चलाते हो उसको 70-60 कीजिए, क्योंकि जो कोहरे की वजह से विजुअलिटी नहीं दिखती और कहीं ना कहीं ये हादसे का एक कारण बनता है। जी चलिए, let me also speak with Anil Chaudhary, who joins us from Ghaziabad at this point in time.
अनिल, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, बताइए आपके आसपास क्या माहौल है। और तस्वीरों से तो लग रहा है कि धुंधला ही है माहौल आपके पीछे। देखिए, सुबह से ही न्यूज एक्स की टीम लगातार रिपोर्ट कर रही है और अपने दर्शकों को समझा रही है यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो क्या स्थिति सड़कों पर देखने को मिलेगी। इससे ये सभी पहलुओं पर हम बताने जा रहे हैं। आखिरकार दरअसल जिस तरीके से लगातार कोहरा और जिस तरीके से सर्दी बढ़ रही है उसको लेकर जो मौसम विभाग है उनकी तरफ से रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आगामी 24 घंटे तक घना कोहरा और सर्दी का जो प्रचंड रूप जो है देखने को मिल सकता है। इस तरीके की बातें जो है कही गई है। हालांकि सुबह से टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, ऐसे में कोहरा भी घना कोहरा देखा जा रहा है। हालांकि जैसे जैसे अब समय बढ़ा है, 10 बज चुके हैं, तो थोड़ा सा कोहरे में गिरावट जरूर देखी गई है। जो तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, जो बिल्डिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं जो कोहरे की आगोश में आपको दिख रही है, ये कोहरा है। और लगातार जिस तरीके से सर्दी बढ़ रही है, इसको लेकर गाजियाबाद के जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह रैन बसेरे का इंतजाम भी किया गया है, साथ ही अलाव की व्यवस्था भी की गई है। वहीं आम जनजीवन किस तरीके से प्रभावित हो रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो रेलवे यातायात है वहां पर भी काफी फर्क पड़ा है। दर्जनों ट्रेन है वो 2 से 3 घंटे जो है लेट चल रही हैं। जो समय है उससे 2 से 3 घंटे लेट चल रही हैं। अनाउंसमेंट लगातार हो रहा है। लोगों को, जो लोग यात्री इंतजार कर रहे हैं, उनको ये पता लग रहा है कि आपकी ट्रेन 2 या 3 घंटे लेट है। और साथ ही कई ट्रेन तो ऐसी भी हैं जिनको घने कोहरे के चलते कैंसिल भी कर दिया गया। आप समझ सकते हैं किस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने जिस तरीके से कहा है कि आगामी 24 घंटे और ज्यादा इस तरीके के हालात बने रह सकते हैं। अब देखना यही होगा आखिरकार किस तरीके के हालात आने वाले वक्त में रह रहे हैं। फिलहाल जो है सर्दी से तो राहत नहीं मिलने वाली है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.